Hello, welcome friends. Today we are organizing this ECGC program, and today with us is Mr. Harjeet Singh and Mr. Amit Kumar from ECGC. And I request Pasiji to welcome Mr. Amit Kumar. And Harjeet Singh. I request Mr. Amit Kumar to start. ECGC is actually an insurance company, pure credit insurance company, right? And we are working under Ministry of Commerce. What is our role? Our role is to provide non-payment risk from the overseas buyer, which means if any exporter is making any export consignment on credit terms or open delivery. When we say credit, it involves maybe DA30, DA60, DA90. Open delivery is also there. Some exporter is making a shipment on TP basis, documents against payment, or sometimes they call CAD. So, and some exporters make consignment on LC also. So, other than advance, where exporter is receiving money before BL date, all other terms of payment where exporter is making export, it have a lot of risk of non-payment, that if the buyer is receiving the goods, whether after receiving the goods, whether buyer will give you the payment or not. Because see, ultimately the entire whole process of doing export is that ultimately you have to receive the payment. If the payment is not coming, the entire effort is going waste. It has no meaning. And irrespective of the experience of exporter with the buyer, you may have 1 year, 2 years, 5 year experience, but that experience doesn't count you or will help you once the buyer will actually default. People always boast about that I have a very strong relationship with the buyer. I know him from last 10 years, 15 years. But in business, nothing prevails. Once you will not receive the payment, the same friend or same buyer will become an enemy. So it is our duty for the exporter that if you are having a risk, you should definitely protect it. And if there is an instrument available in the market where you can really protect 90% or 95% of your receivables, I strongly believe that as a businessman, if I am making an export of 100 rupees and let's say any insurance company is there and they are telling you that okay, you have to spend 0.5% or maybe the 1%, and out of 100 rupees, 1 rupees or maybe 50 paisa, you have to spend for the insurance part, and what you will get? You will get this sleep, the comfort that if the buyer will not make you payment, ECGC will pay you 95 rupees or 90 rupees or even 100 rupees. We have the product for the small MSME, less than 5 crore turnover, where we are providing a 100% cover. So that kind of comfort is there when you are having ECGC policy. So with this request that you should definitely go ahead and take ECGC whenever you are making export on DP terms or DA terms. Don't make the risk. See, for the shorter period, it's like a short-term gain and long-term gain. Short-term, you may feel that why to take any insurance? I know him and I am getting a good money from last 1-2 years. I don't have any issue. But you think as a businessman, as a professional businessman, and once you think, then you have to think in that way that if at all the payment will not come, where I should go. Because let's say you have taken money from your bank. So there are a lot of other liabilities also. If you have an insurance, at least we will pay you, you can give it back to your bank, and everything will be in a normal condition.
So that is the whole motto of ECGC and ECGC, whatever insurance product we have. As we have already said, okay, so vision and mission, nothing to elaborate. See that because more than 67 years of ECGC is there, and we are serving only two set of clients. One set of client is exporter and one set of client is our bank. So all banks in India, all public sector bank in India, whatever loan they are providing to exporters, either in the form of packing credit or the post-shipment facility, right? Entire loan is providing covered by the ECGC to all public sector banks. Some private banks, they are taking it because it's their choice. So some banks are taking, some banks are not taking on a choice basis. But as far as the PSU bank is concerned, entire loan is covered by the ECGC, which means if the borrower will get default or borrower will become NPA, the bank have the recourse or bank have the proper insurance policy that he can take claim from the ECGC. So you see, the bank is so smart. Bank has taken a proper cover that if the borrower will get default, where the bank will go? The bank have the collateral, maybe in the form of collateral, and ECGC insurance policy is also there. In the same way, each exporter must have the backup plan or the risk mitigation measure. That if your buyer will not pay, where you should go. So this is a small information about ECGC. As I have already told you that we are working under Ministry of Commerce. So the purpose here is that whatever we say, whatever we quote, everything is very transparent. It doesn't work like a private insurance company. Whatever information if you are getting from Delhi, same information you will get it from the Kerala also. Okay, so the pan India, one information, and it goes with the entire pan India branches. There is nothing that you can find a difference. So that kind of transparency we are maintaining. And because we are governed by the board of directors, so every action is closely watched by the ministry also. So we are a very responsible company where we have to provide all type of support to ECGC. You can see we have the pan India branches. So all over the world, all state capital, I think almost all state capitals we have the branches. So wherever you are, you can definitely take ECGC cover. Now ECGC, I think becomes a cashless because most of the policy we can take online. There is no need to visit the physical branches also. So we have come up with a lot of digitalization. Now, what we have discussed, this is the terms of payment. Every exporter is using it for their export. So you can see DA, I think because you are, I believe that you are exporter, so you know what is the meaning of DA. See, risk point of view, what is the meaning of DA? Buyer is taking the goods and after some certain days, 30 days, 40 days, 60 days, whatever, then they are give you the payment. It's like ना उधार, ये उधार है. आप ये सोच के देखो कि अगर आप लोकल में उधार देते हैं, how much comfort you have that आपका सामने वाला पेमेंट आपको करेगा ही नहीं करेगा. So even in India, if you are giving a credit to someone and if you are not getting back the money, do you really think it is so easy to get back the money? It's not like that. तो अब हम जब इंडिया में रह के अपना खुद का पैसा नहीं ले सकते हैं, तो you can think of how difficult it is to get it back from the foreign countries. तो DA का मतलब यही है कि you are allowing buyer to get the goods and then after certain days they will give you the payment. It's like a 100% risk. Open delivery goes with the same line, जहाँ आप buyer आपका सामान लेता है और सामान लेने के बाद पैसा देता है, right? It is expected the moment he will receive the goods, he will make you the payment. But mind it, he has already taken the goods. So the onus is on the buyer only. If he will pay, everything is good. If he is not paying, again you have to run from pillar to post. So both risk point of view, both are the same. And then comes the DP and then comes the LC.
Documents against payment, those who are making shipment on documents against payment or CAT, they have this feeling that it doesn't have any risk at all. What is the point of taking any insurance? See how it works. So when we say DP, what does it mean? It means that you are making export through sea, not through air. Because you are not allowing buyer to take the goods unless he will give you the payment. So how it happens? The transaction that you will make a export, the entire document, the original document is with you. Let's say the ship is already sailed from India. Now we have the apprehension that because the entire document is with us, so what buyer will do? So buyer is supposed to pay. Now with that anticipation, the ship is in the high sea. Now think about the situation that the buyer is saying you, I am cancelling my order. नहीं मैं आपका ऑर्डर ही कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, या मैं आपका मार्केट में आपका माल ये प्राइस ही क्रैश कर गया है तो मुझे आपका माल ही नहीं चाहिए. व्हाट यू विल डू? या फिर वो बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, सो शिप इज इन द स्टिल हाई इन द हाई सी, या शिप पोर्ट के पास पहुंच चुका है एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि बायर रिस्पॉन्ड करे. ना बायर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, या बायर रिस्पॉन्ड कर भी रहा है एंड देन ही इज सेइंग दैट सॉरी आई कांट टेक योर गुड्स. नाउ इट इज योर बेबी, you are the owner, you have to take a call, you can't simply dump it. Now in order to minimize the loss, you have the option of either re-importing the entire goods back to India, or maybe you will find some other buyer to resell it. तो आप सोच के देखो कि अगर कोई $1,00,000 का इनवॉइस है और उस पर आपको ये सिचुएशन आ जाए डीपी के केस में, आई बिलीव मिनिमम से मिनिमम भी जो एक्सपेंस है वो 25% ऑफ इनवॉइस तो हो ही जाता है, जिसके अंदर अगर आप रीइम्पोर्ट करेंगे तो ये आने और जाने का खर्चा और पोर्ट के डैमेज चार्जेस, और अगर आप रीसेल भी करते हैं तो रीसेल कोई किसी भी बार का अगर इफ यू विल फाइंड आउट दे विल आस्क यू द डिस्काउंट, ऐसे तो कोई लेगा नहीं. डिस्ट्रेस सेल है, दे में आकर 10%, 20%, समटाइम दे आकर 50% डिस्काउंट कि मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिया है, मैं माल क्यों लूँ. बट आपके लिए हेडेक है कि ये माल वापस लाने से बेटर है कि मैं किसी को सेल कर दूँ. तो पॉइंट इज इट इज अ वेरी डिस्ट्रेस सिचुएशन फॉर एनी एक्सपोर्टर, स्पेशली फॉर द स्मॉल साइज एक्सपोर्टर. हम जितनी आराम से ये बातें कर रहे हैं, एक्चुअल जब कोई फेस करता है तो उसे ये रियल में लगता है कि अब मैं करूँ क्या. सो द पॉइंट इज कि ये रीसेल और रीइम्पोर्ट जब आप करेंगे तो यू विल डेफिनेटली इनकर अ लॉस. और इसी जैसी की अगर आपने पॉलिसी ली हुई है तो अगर आप रीसेल करते हैं और नेक्स्ट बायर को आप जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं, जो पोर्ट के डेवरेज चार्जेज है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ लॉस. यानी कि इस पूरे लॉस का 90% या 95% ECGC आपको पॉलिसी के अंदर पे करती है. और अगर आप रीइम्पोर्ट करते हैं तो आने और जाने का खर्चा और पोर्ट का डैमेज चार्जेस. तो यू सी द बेनिफिट ऑफ ECGC दैट इफ यू कैन रेडी टू spare 0.5% or 1% with the ECGC, okay, of your margin, because ultimately it will hit your margin, जो भी आपका मार्जिन है. तो अगर आप ये मार्जिन शेयर करना चाहते हैं तो दिस टाइप ऑफ कंफर्ट यू विल गेट इट, एंड दिस इज वेरी कॉमन. ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि बायर का रिजेक्शन होना या ऑर्डर का कैंसिल होना, आई बिलीव चूंकि आप लोग हैंडीक्राफ्ट से हैं, एक बायर था USA का John store, it is a very big buyer and they always buy this cosmetic items जो normally हम लोग UK और USA में use करते हैं, and they have given an order of more than 30 crores from Indian exporters, and out of this 30 crore almost 24 crores exposure we have taken, and just like that the buyer become insolvent. So there are a lot of consignments which are still in the high sea and they have the buyer has announced the insolvency, and it is a pure cosmetic product which has been designed as per the buyer's requirement. You see the pain. So it's like if somebody is asking even for the resale, they are asking with a 70% discount because it's just like some cosmetic item, it's not an essential item. So the point is, it's a very painful exercise if somebody is really going into that situation. So
all these terms of payment on which we are making export, you must accept this, that there is a lot of risk are there, and if you are not facing it, you are very lucky. But it doesn't mean that in the future you will not get it. So it is the right time, and in good time you have to think that whether this risk I have to always be, it is on my head, or I should take a proper insurance cover. LC we talk about, it is a very safe terms of payment out of all these. But in LC also we face claim under DCGC. In every year we face LC claim, and when we face LC claim, it is again more complex in nature, because LC has a very different set of requirements. They govern by some UCPDC rule. They have all set of whole lot of information, and the rules are there that you have to provide this, that. Anything, any document missing, the bank, LC issuing bank has a right to deny the payment. Fumigation certificate has to be there. 3 copy in original. You have given her only 2 copy. The LC issuing bank has a full right to deny the payment. So it goes with the pure documentation part. So when we are getting claim, they just cite just like that, although it has no material impact, but bank has the right to deny it. So this is how you have to see the all terms of payment and the risk associated with it, and you should never see this as a normal thing that just because you have not faced that situation. And the Sri Lanka part, the Egypt part, the Argentina part. See, when we say political risk, it is not only with the war, it is goes with the currency forex problem also. That you have sent the shipment, buyer is also willing to make you the payment, but the country is not having enough foreign exchange. So that part is also covered in the political risk, which is by default under any policy. And those, if you are a handicraft, but I am just giving one example. Recently in Algeria, because a lot of Indian exporters are making a rice consignment to Algeria. Now I think more than 40-50 crores consignment were on the high sea, and that time the government of Algeria has announced that we have revised the lead percentage in the rice 0.3 to 0.35 or something. Okay, it's very minimal thing. Now all of a sudden this new impact has come. Now all container has to be tested in the government lab of Algeria. The container who got green signal, it will allow in the Algeria, otherwise it will be thrown back. You have to take it back. You see how painful is this. You don't have any control, nobody has any control. But if exporter is having the ATGC cover, then either you are reselling it to some, because the rice, you can sell it to some other countries who doesn't have this sudden rule, or maybe you can re-import it back also. So political risk cover that. You must have heard about the Suez Canal impact. All of a sudden we come to know from the newspaper that it is getting stuck. Now the shipping liner is charging you $300 or maybe $400 per container extra, because you have to go with a longer route. So if your shipment is on the high sea and something is happening at a geopolitical level where you don't have any control, in that case also, whatever extra expense you will make, it is well covered within the ECGC. So, and Egypt also, there are a lot of exporters who are making export to the Egypt, and Egypt has a rationing kind of thing, that okay, the essential thing they are allowing it, then it's like a 6 month waiting, 4 month waiting, 8 month waiting. Last 1 year, that was the scenario. So people are waiting in queue. Exporter, buyer has paid in local currency to the bank, but the buyer bank is saying maybe it will take another 6 months or 9 months to give it back, because we don't have the foreign currency. So all these problems, it just happens just like that, and if you have the cover, definitely ECGC will take it. Now we have discussed about the political risk, and the same goes with the commercial risk, which we have already discussed.
while we are discussing the terms of payment. See, when we say commercial risk, basically it is with respect to the buyer. So, insolvency we have discussed. Default is a simple default. That buyer has taken the goods and is not taking payment is the default. Reputation is a non-acceptance. कि शिपमेंट हाइजीन में है और बायर आपको गुड्स लेने से ही मना कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो ये सारे के सारे जो है ये कमर्शियल रिस्क में आता है. तो हम पॉलिटिकल रिस्क भी पॉलिसी के अंदर बाय डिफॉल्ट कवर है और कमर्शियल रिस्क भी बाय डिफॉल्ट कवर है. अगर आप इसी पॉलिसी ले रहे हैं तो ये सारे रिस्क जिसकी हम बात कर रहे हैं ये उसके अंदर कवर होता है. और इसकी वजह से अगर आपका कोई लॉस होता है देन 90% और 95% यू विल गेट. ये एक जस्ट स्नैपशॉट है ये बताने के लिए कि आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो या कितना भी आपको कॉन्फिडेंस हो, उसके बावजूद चीज़ें होती रहती है विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल और लॉस होता रहता है. अब पॉइंट है कि क्या आप अपने बैड डेट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखते हैं और आपको लगता है कि हाँ इतना बड़ा कॉल लेना है. इससे कम्प्लीटली योर कॉल. एज ए बिजनेस मैन आपको ये कॉल लेना है कि ठीक है अगर 4 साल में एक बड़ा डिफॉल्ट आ भी गया तो आई विल टेक केयर. सो यू सी आई हैव जस्ट मेंशन इट इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेटेड रिस्क एज वेल एज द कमर्शियल रिस्क, कि ये इस सारे रिस्क पैटर्न पे हर साल वर्ल्ड के लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है और आगे भी होगा और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है. यूएसए जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मार्केट माना जाता है, ठीक है, इट गोज ना कि पूरी दुनिया बनाती है और यूएसए कंज्यूम करता है. बट आपको ये हैरानी होगी कि ईसीजीसी के 50 साल की हिस्ट्री में अगर हमने सबसे ज़्यादा क्लेम दिया है तो यूएसए को दिया है. और हर साल अगर हमारा नंबर 1 कंट्री है जिसको हम सबसे ज़्यादा क्लेम देते हैं, जहाँ के बाहर डिफॉल्ट करते हैं, तो वो भी यूएसए ही है. यू सी द It's not Ethiopia, it's not Iran, it's not African countries जहाँ हमको फियर है कि ये छोटी कंट्री है यहाँ पे हमारा पैसा डूब जाएगा. यहाँ पे पैसा नहीं डूबता है. They are the good people, they give you the order, sooner or later they will pay. But USA में जो बड़े बड़े बायर हैं, big size बायर, big brand, they are in the business for 20 years, 30 years, they have the exposure with the India maybe 400 crore. And then all of a sudden they go insolvent. Very easy ना, चैप्टर 11 फाइल कर दो, बहुत इजी है. और चैप्टर 11 फाइल किया, 1 साल के बाद वही प्रोमोटर भी एक नई कंपनी में बना लेते हैं. वहाँ का रूल अलाउ करता है, हमारा रूल अलाउ नहीं करता है इंडिया में. सो और फिर अपनी सारी लाइबिलिटीज उनके पीछे चली गई, उनको उस लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है. तो यूएसए ने जो भी रूल बना रखा है इसकी वजह से यूएसए में इंसॉल्वेंसी बहुत आम बात है. और बड़े बड़े ब्रांड जो है ना, मदर केयर इतना बड़ा ब्रांड था, चला गया. ठीक है, मतलब नाम खत्म नहीं होता है. एक डेमेनेमस बायर था जो वन ऑफ द मोस्ट मतलब पावरफुल बायर है ना, हैविंग अ वेरी बिग रेपुटेशन. ईसीजीसी अलोन हैव द एक्सपोजर ऑफ मोर देन 400 करोड़ ऑन द बायर. डेमेनेमस की हिस्ट्री 30 साल से ऊपर की थी एंड जस्ट लाइक दैट वर्ल्ड डिफॉल्ट. इट्स नॉट डिफॉल्ट, इट्स बेसिकली इंसॉल्वेंट. तो द पॉइंट इज कि जो बड़ा बायर हम जिसको समझते हैं वो तब तक है जब तक वो है. जिस दिन जाएगा वो आपकी कंपनी को भी लेके चला जाएगा. तो दीज आर द गुड एग्जांपल टू नो, जस्ट फील दैट वी शुड नॉट टेक एनी रिस्क जस्ट लाइक दैट एंड इट इज आवर ड्यूटी टू सेफगार्ड आवर बिजनेस, आवर फैमिली एंड इट इज बेटर टू प्रोटेक्ट इट विद द कॉस्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट. And now we are advising, we are educating, we are doing seminars. What is the entire purpose? See, the entire purpose is that no exporter should face this situation that after making the hard effort of getting order, doing everything, and then he ultimately is not making he is not getting a payment. So there is no point. So our effort is that everybody should aware that yes, there is a product where you can get a cover. And ECGC is not protecting only your business. You don't see ECGC just as a protector for your business. Actually, the 50% role of ECGC is for your new market. Because when you are going and venturing in a new market,
finding a new buyer, then it is very difficult to talk about the credibility कि वो buyer अच्छा है या नहीं है. I have heard and I have discussed with lot of exporters जहाँ exporter ये कहते हैं कि सर ऑर्डर तो था पर वो ₹30 पे मांग रहा था तो हमने तो ऑर्डर ही नहीं कंफर्म किया. अच्छा, who has stopped you not to go ahead? Why you are so fearful कि सर वो उधार मांग रहा है तो हम तो उधार लेंगे नहीं. उधार is the buzzword of the entire world. अगर आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो आप अगर उधार नहीं दे रहे हैं तो कोई दूसरा उधार दे रहा है. तो ऐसा नहीं है कि somebody will offer in advance. So the point is credit is the norm. You have to go by the time. जो समय चल रहा है, you have to go with the same flow. So rather than not accepting and not entertaining the order from the African market or the non-unconventional market, you should talk and you should discuss with the new buyer. If you see the potential, you see the potential of orders and the buyer, just come back to the ECGC, ask the ECGC for the underwriting the buyers. We will underwrite it. We will underwrite the risk also, and then with that confidence that yes, if ECGC is giving us the policy, at least my 95% or 100% risk is covered. So with that protection, I request you to expand your business. So this is another tool or the benefit of ECGC that besides protecting your existing business, you can venture into a new market, new buyer, new country. So the message of ECGC that all exporters should think that entire world is your market. You should never think कि अच्छा यही मेरा buyer है, यही country है, 10 साल इसके साथ काम कर रहे हैं, मेरा घर अच्छा चल रहा है और दुकान भी अच्छी चल रही है, बस इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है. बिल्कुल नहीं. आपको ये सोचना है कि क्या ये मैं प्रोडक्ट मैं और कौन सी कंट्री में बेच सकता हूँ, भले ही वो आपसे 3 महीने की उधारी मांग रहा हो. ये पार्ट आप ECGC को छोड़ो और फिर आपको लगेगा शायद जो 5 करोड़ या 10 करोड़ का टर्नओवर था वो देखते देखते 100 करोड़ के टर्नओवर में कन्वर्ट हो गया. एंड इफ समथिंग if you fall back, we are there. You should know, you know that how it works, and when you take a policy, we will educate you also कि policy के अंदर कोई compliance है या नहीं है. So this is the highlight of ECGC. तकरीबन आज की तारीख में अगर हम active buyers की बात करें तो more than 90,000 or approx 1 lakh active buyers we have, which we are providing a cover to the entire exporter industry. We have a database of more than 5-6 lakh buyers. So active buyers we talk maybe 90,000 or 1 lakh which are currently doing business with India, and those who are our policy holder. But because we are so old, so we have a whole list of buyers who have some point of time defaulted from exporter. So that is another advantage of going with the ECGC, that if you are talking with a new buyer, we are in a better position to tell you कि सर इसका ना कोई पुरानी history है, he is in our caution list, better you not to go ahead, why you are not wasting your energy. So that pre-check, pre-scrutiny, we can provide you because we have a long database of the entire buyer. So other than the providing exporters to the policy, we are providing this sort of facilitation to our exporter community, that whenever you are talking or discussing with a new buyer, if you are the policy holder, we will give you the facility, a search engine sort of, where you can just type some 2-3 letters and you will come to know that whether this buyer is in a defaulter list of ECGC or not. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे थाने में किसी की फोटो लगी है या नहीं लगी है. अगर लगी है तो हम कम से कम 4 बार सोचेंगे कि उससे हमें बिजनेस करना है या नहीं करना है. आपको फिर भी करना है, वो आपका कॉल है. But at least your eyes and ears will be more clear कि हमें उससे करना है या नहीं करना है. So that facility also we are providing to our policy holder. So what are the benefits? We have already explained कि पूरे वर्ल्ड को आपको ये सोचना है. That is the real motto of ECGC, and the real success of ECGC goes only when our Indian exporter feels that yes, entire world is our market. I can sell my product to any part in the world. I should not fear it. And if somebody is asking me on credit, no worry. You
No, you take into account the cost of ECGC as your costing. हाँ हमें ना ये पिंच होता है कि ये unnecessary cost है ECGC का 0.5% या maybe 1%. अगर ये आप अपनी कॉस्टिंग में ही इंक्लूड करेंगे ना तो शायद वो भी पिंचिंग नहीं होगा और उसके बाद आप किसी को अपना कॉस्टिंग या प्राइसिंग आप दीजिए. So you should always take, this is my request, that after taking into account the cost of insurance, अगर आप किसी को कॉस्टिंग दे रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस का कॉस्ट भी बर्डन नहीं लगेगा और आप बहुत क्लियर हैं कि हाँ कि अगर हम ECGC ले रहे हैं तो समथिंग विल गो रॉन्ग, आई विल गेट बैक द 90% and 95%. And if any new buyer from the new territory is approaching you or you are discussing with, आपके लिए स्टार्ट है. हो सकता है कि वही बायर जहाँ आप स्टार्ट कर रहे हैं अगले 1 साल में वो आपका सबसे बड़ा बायर बन जाए. And everybody is looking for a credit. See, this world demands credit, and when we talk about the credit, it has a 100% risk. But this is how we can expand our business. And ECGC is very, very liberal in providing cover. This is another big point of ECGC, that we are so much of liberal in our underwriting. We have lot of examples जहाँ एक buyer का net worth negative है as per the financial report और उस buyer में हमने 50-50 करोड़ 100 करोड़ की cover ली हुई है. See, that kind of support we are providing not to the new exporter who are coming to the ECGC, but let's see there are 10 exporters who are with the ECGC from last 10 years. The buyer was good, but now the buyer financials is getting deteriorated due to so many factors. But the buyer is making a regular payment to the exporters. So ECGC is very liberal, that even the net worth is negative, if the payment experience is good, we still cooperate and provide cover to the exporter. So the underwriting part is very, very liberal with the ECGC, and as it goes without saying कि अगर आपने ECGC ले रखा है, it is not a collateral, but it always acts as a collateral to the bank. क्योंकि बैंक के पास ये कंफर्ट जरूर रहता है कि if some exporter is having a ECGC policy, तो कल को कि ये बायर का पेमेंट नहीं भी आएगा तो ECGC will pay back, right? तो एक सॉर्ट ऑफ कोलेटरल जरूर काउंट करता है अगर आप बैंक से कोई फाइनेंस लेते हैं तो. और जैसा मैंने बताया कि इफ यू हैव द इंश्योरेंस इन इवेंट द बायर इज नॉट मेकिंग यू पेमेंट, यस फॉर द शॉर्टर टाइम मे बी योर अकाउंट विल बिकम एनपीए, लेकिन जस्ट विद इन 2 months 3 months of even एनपीए, once the payment will come back from the ECGC, your entire account will get standard. So that is the beauty of taking insurance, rather than entire company will just go off. So if you have the policy, even for the rough time is there, but उस rough time के बाद वो normal good time भी आएगा. You have the requirement. It may be you want cover for one order, you want cover for one buyer, you want cover for your entire export, you want cover on Lebanon, you want cover on Palestine, Mozambique, Ethiopia, you name it. We provide it. That sort of commitment, that sort of responsibility we carry, that as of now only Pakistan is out of cover. Otherwise, no countries in the world where we are saying sorry we can't give you. See, all countries are covered, but yes, whether we will provide cover to that buyer, it goes with the information, financial information and other information on the buyer. The point is, wherever you are getting orders or inquiry from any part of the world, you should definitely entertain it, and you feel it, then you can come back with the ECGC. So we have lot of products to cater you, and if your turnover is good, we have a tailor-made policy where we design as per your wish. It is not a off-the-shelf product. If you say that I need cover on that, I need a consignment policy, I need to cover for my sister concern companies also. So lot of things we can accommodate in a single policy. So as per your requirement, we can provide if your turnover is good. Just a rough figure that risk value distribution country wise how we are providing cover. Nothing much to discuss about.
As far the industries is concerned, you can see that almost all industries wherever export is making, we are providing a good cover, and all export promotion councils, we are on the same page, and we try to educate all through promotion council to the entire exporter community that it is not wise to make export without ECGC, because see, if you take it or not take it, it is your call. But it is really painful to see that first time exporter, even a 1-year-old exporter, having a loss of 40 lakhs and 50 lakhs. So that loss is like a company can't survive. And if it is the case that really you have the buyers or a good buyer and you don't require insurance, I will just give you a simple example. The industrial revolution comes from Tamil Nadu, the Chennai. I think you have a little bit idea that entire automotive parts, you talk about the engines, you talk about the brakes, small parts. World top companies, you name it, maybe the Aston Martin, you name it, the Volvo, the BMW, the Mercedes-Benz, all these companies, they are taking part from the companies based in Chennai, and all are the Sundaram Group and TVS Group companies. They have made this company 30 years back. What they are making? One company is making just brake for all sort of cars, for all types of companies. Another company is making a sparker, which start the engine. So you see the thought process, and who are the buyers? It's like a BMW. Anybody can vouch for BMW कैसे default हो सकता है. But another angle is that the corporate angle thinks different. कि अगर मुझे स्टार्ट करना है ना, I can't avoid the risk तो है. अगर हम क्रेडिट दे रहे हैं तो रिस्क है. So you see, अगर इतनी बड़ी कंपनी पिछले 30 साल से अगर ECGC के साथ जुड़ी है और आज उनका जो सफर है जो शायद मे भी 20 करोड़ से या 10 करोड़ से स्टार्ट होगा, आज हर कंपनी 300, 400, 500 करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, भले ही वो छोटा आइटम. So the MRF is with us for maybe more than 25 years. So my message here is कि जो कंपनी के पास एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी है, they have the capacity to absorb the bad debt, फिर भी वो ऐसा नहीं करते हैं कि without insurance they don't work. They have the simple policy, अगर क्रेडिट पे है, ECGC ने इंश्योरेंस दिया है, तभी हम एक्सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम ऑर्डर ही कैंसिल कर देंगे. As simple as it is. So I think this works so fantastic. ऑर्डर मिलना, ECGC का कवर का हाँ बोलना, and then you are making export. क्योंकि ECGC हमेशा हाँ नहीं बोलती है, ना भी बोलती है. We reject the policy कि हम देंगे ही नहीं because buyer is not good. तो ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, और आपके कंपनी का टर्नओवर इट कैन गो टू एनी लेंथ. so not required to read it. I have already told you the entire world we are providing cover. With this map you can see all yellow part we are providing cover. Pakistan is still yellow because before Sindoor operation we are providing cover to Pakistan also, but after Sindoor operation it is out of cover. This is buyer underwriting scorecard. What does it mean? Just to give you the feeling when we are providing policy, it is not just like normal yes or no. We have a lot of in-house underwriting mechanism where we don't only see the financial, we see a lot of things. See, it's like we take a calculative risk. We are also taking a risk. And on the flip side, अगर मैं आपके शूज में रह के बात करूँ कि आपकी तरफ से एक क्वेश्चन अगर मैं ये करूँ ECGC को कि अगर ECGC इतना ही चेक करके सारा चेकिंग करके अगर पॉलिसी दे रही है तो या तो वो बहुत अच्छा बायर है तभी हम पॉलिसी दे रहे हैं, और अगर इतना ही अच्छा बायर है तो फिर ये डिफॉल्ट कैसे हो जा रहा है. सो द पॉइंट इज कि हम हर साल एक्सपोर्टर को पॉलिसी देते हैं और उसके लिए हम पूरी चेकिंग करते हैं बायर की, और हम जहाँ सेटिस्फाई होते हैं तभी हम देते हैं. उसके बावजूद हम हर साल मिनिमम 500 से 600 करोड़ का क्लेम डिस्पर्स करते हैं. हाउ इट इज वेरी कॉन्ट्रेरी कि जो ऑलरेडी एक स्टर्न पैरामीटर्स पे अंडरराइटिंग की गई बायर है उसके वो बायर भी डिफॉल्ट कर जा रहा है.
तो फिर बाकी जो खराब बायर उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एक्सपर्टीज वी हैव, हम खुद ही कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बायर डिफॉल्ट करेगा और कब करेगा, और हम हर साल क्लेम देते हैं। तो किसी एक्सपोर्टर के लिए ये जज कर पाना इज वेरी वेरी टफ। तो दिस इज द कंट्री रिस्क रेटिंग, लाइक ना हमने पूरे वर्ल्ड के सारी कंट्रीज की रिस्क रेटिंग कर रखी है और 7 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, और उसकी रेटिंग है A1 A2 करके। A1 इज अ गुड रिस्क, और जो D है सबसे लोअर कैटेगरी है। तो एनी प्रोडक्ट ECGC में अगर आप लेते हैं तो जैसे जैसे रिस्क हाई होगा प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। इट इज गोज विद द थिंग, इफ द कंट्री रिस्क इज गुड लाइक A1 क्या आएगा, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड लाइक दैट, तो आपका प्रीमियम निश्चित तौर पे सबसे कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये कंट्री की रिस्क कैटेगरी बढ़ती जाएगी आपका प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है, एंड दिस इज जस्ट फिगर टू शो यू कि हमने 2020-21 के टाइम में आप देखिए हाउ मच क्लेम किया पे, एंड दिस इज द CAG ऑडिटेड फिगर 1046 करोड़। Last 1-2 years we are not receiving too much of claim, but you can see that 2021 how much almost our entire income has gone to the claim, but it doesn't affect us. Why? Because we have so much of paying capacity to the in terms of claim, because whatever we are paying it is not from only our premium. We have our own net worth, and we have a lot of backing by the government also. Say there is a separate fund of 2,500 crore. We have our own net worth of more than 10,000 crore. So the claim paying capacity doesn't relate with the premium income what we have. So thank you for your listening, and if you have any questions you can ask. क्या उसके ऊपर भी कोई आप देते हैं, दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सर पूछ रहे हैं कि क्या ऑर्डर आपके पास आ चुका है और अभी तक आपने एक्सपोर्ट किया नहीं है, और आप ऑर्डर ऑलरेडी उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट कर चुके हैं और फिर बाद में ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, और क्या कोई इस तरह का प्रोडक्ट है जो इसको कवर करे। एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न, इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस लीव द ECGC, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पे ऑर्डर कैंसिलेशन का प्री शिपमेंट वाले स्टेज में, शिपमेंट से पहले के स्टेज में अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है और उसकी वजह से जो आपका लॉस हो रहा है ये कवर है। इन माय नॉलेज देयर इज नो प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। वी हैव द प्रोडक्ट फॉर द प्री शिपमेंट रिस्क, बट इट इज ओनली गोज व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। यानी कि जैसे वी टॉक अबाउट एनी बायर इन द टेक्सटाइल और एनी इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको एक 6 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, एंड 6-7 करोड़ के ऑर्डर पे यू एक्वायर सम रॉ मटेरियल एंड यू आर प्रोसेसिंग इट मे बी इन सम सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, एंड इन द मीन टाइम द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। बस वो अकेला एक कारण है इंसॉल्वेंसी, जहाँ पे अगर आपका प्री शिपमेंट है और एक्सपोर्टर की जो ERP सिस्टम है मैकेनिज्म, वो सिस्टम ड्रिवन होनी चाहिए, मैनुअली नहीं होनी चाहिए, विच मीन कि आपका सिस्टम शुड बी एबल टू थ्रो मी द फिगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि इस बायर के किस ऑर्डर पे कितना एक्वायर किया गया और उसकी क्या 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 स्टेजेस हैं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर द सैलरी वैल्यू एंड देन वी एंटरटेन द क्लेम। सो वी हैव द प्रोडक्ट बट ओनली अगेन द बात के लिए मैं एक्सटेंड कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस। आज जैसे अभी एक नया बायर हमारे पास आया, उसका ऑर्डर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो करने से पहले ही हमने ECGC को उसका सारा कुछ बताया। तो उसने ECGC का था कि इटली का बायर है, 95% तक कवरेज देंगे, 30% हमने एडवांस भी लिया बायर से। लेकिन अभी जैसे उसकी शिपमेंट की डिलीवरी डेट थी 23 अक्टूबर और हमारी शिपमेंट कंप्लीट है, पर वो अभी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसका 30% हमारे पास है और ऑर्डर है, बड़ा ही है, 70 लाख तक का है। फिर ECGC से कवरेज मिली हुई है, एश्योर किया था कि दिस बायर इज नॉट डिफॉल्टर, तो दे विल गिव अस 95%। तो अगर ये बायर रिप्लाई नहीं करता है तो आगे कैसे ECGC हमें हेल्प करेगी? आई अंडरस्टैंड कि आपका स्टेटमेंट जा चुका है, राइट? दे आर नॉट रिप्लाइंग ऑन टेकिंग दिस शिपमेंट,
जैसे लॉजिस्टिकल वर्क के लिए when we started asking about the carton markings and Got it, got So whatever the communication is happening with the buyer, so the fate of goods is still with you. So goods is still with you. It has not left the Indian shore, right? Yeah. And buyer is continuously replying us that he is in Russia, he is in And he is not talking about the 30% advance what he has already given to you. He is not worried about that. No, he is worried. He is saying that we will take the shipment because we have already paid 30%. But they wanted the shipment before this summer. Right. So they must have taken by now. And the Christmas is a major part. Yeah. I think anybody is asking any order. So this is a big time for the shopping, right? So in your case, first thing, I think what is the confusion here? There is a communication gap or maybe the educational gap. ECGC policy, what does it provide? It provides any risk after your shipment. Okay. So this is a very clear-cut thing. Any product, what we are saying that we handhold you and we provide cover, only once you make the shipment. Let's see, BL date is 5th December. And even on the 6th December, the buyer will say, I am cancelling my order. Then in that case, वो जो शिप पूरा जाएगा डेस्टिनेशन पोर्ट पे, फिर वहाँ से ये वापस आएगा, सारा का खर्चा ECGC देगा बिकॉज शिपमेंट हो चुका है. बट अगर शिपमेंट करने के पहले उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया या एनीथिंग हैपन, बिकॉज द पॉलिसी इटसेल्फ इनिशिएट ओनली व्हेन द शिपमेंट इज टेकिंग प्लेस. सो बिफोर दैट एनीथिंग इज हैपनिंग, इट इज नॉट covered under any ECGC policy. Another Sir, but question you can I just ask? said that you have another. I have the pre-shipment cover, but if some exporter has taken it and under pre-shipment cover, the cover is only if the buyer become insolvent, not because of the cancellation of order. Okay, but what are the other things that you just said on the pre-shipment cover that you have to be on what systems and? No. I have said that in order to give you the pre-shipment cover to any exporter, Right. there are a lot of pre-conditions. We can't give you to any exporter. So that condition I have explained. There is a enterprise risk management (ERP). It's like a software in your company, like in your factory, where there is a proper channel or proper way to find out that at which stage, where is the raw material, where is the stage, how much is the completion part. Because if we have to pay you the claim, how will you pay the claim? Because in order to pay the claim, we have to find कि अच्छा आपका 6 करोड़ का ऑर्डर आया था, इस 6 करोड़ के अगेंस्ट में आपने माल कितना लिया, तो आप बताएंगे सर हमने 4 करोड़ का ये रॉ कॉटन ले लिया था या जो भी लिया था. अब इस रॉ कॉटन में से ये कुछ तो है ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे है, कुछ अभी कटिंग वाली फेज में चल रहा है. तो ये हम प्री डिफाइंड पहले ही पॉलिसी देने के पहले करते हैं कि हर एक स्टेजेस के हिसाब से सैलवेज वैल्यू क्या है. ये हम पॉलिसी इशू करने के पहले ही आपसे बात करके कमोडिटी के हिसाब से. तो अंडर पॉलिसी इट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि अगर आपका इंसॉल्वेंसी की वजह से आपका जो फैक्ट्री में माल है उसमें किस किस स्टेजेस पे अगर जो भी माल होगा उसकी हम सैलवेज वैल्यू क्या निकालेंगे और उस अकॉर्डिंगली सैलवेज वैल्यू निकाल के जो रेस्ट ऑफ द लॉस है उसको हम क्लेम में टेक केयर करते हैं. But most exporters in Panipat, Moradabad, Karur, they are not on ERP basis. I agree, sir. That is why I'm saying this, and even it is an ERP, people will not prefer this cover, which is only providing insolvency. Because But what has happened in the last year that because of insolvency there is far more claims, Right. especially from the US. Insolvency is always have the largest amount of claim, but this product has actually come because of the pressure from textile ministry and the textile lobby. Right. All textile lobby has pressuring the ministry for last 3-4 years that ECGC should come up with the product, because if you see the track record of insolvency in the last 10 years, 80% insolvency is on account of those buyers who are dealing with the textile. तो टेक्सटाइल वाले जो बायर हैं वो सीधा इंसॉल्वेंट ही होते हैं, डिफॉल्ट नहीं होते. उनका डिफॉल्ट रेयर टू रेयर है. तो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो
H&M और जारा और इन सबको जो सप्लाई करते हैं टॉमी को, और उनकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर वो पूरा रोबोट सिस्टम होता है कि ये पूरा मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, एवरीथिंग इज ट्रैक, और क्योंकि तो उनके लिए लाया गया है। अब हम ये बाकी भी मैन्युफैक्चरर को अलाउ कर रहे हैं कि अगर आपने ये सिस्टम रखा है और आप ये सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, देन वी कैन गिव यू टू ऑल। So, I personally feel that EPCH should then make a recommendation to ECGC saying that this should not be just ERP based because it doesn't make sense. Yes, sir. Because, You have. how does the ERP today come into place? But if I have exported the goods, you cover me up. No. But if I have not exported the goods, Sir, then you need an ERP system. no. See, the thing is, it is your factory. Let's see, I am standing in this factory. Just think about it. And these chair, every chair is an item, right? And it is a whole lot of loss. Now, can any insurance company can stand and see कि अच्छा ये वाला जो है ना ये इस बायर का माल है और वो बायर इस बायर का माल है? Who will identify that? I understand. It's not possible, ना? I understand. So there must be some mechanism. Either वो register basis पे हो रहा है, कुछ तो चीजें हैं जो एक streamline है, because out of the entire raw material in the godown, who will identify कि ये item किस buyer का है? Because it's very easy to say ना कि ये तो इसी buyer का था, सारा माल पड़ा हुआ ये देखो दूर तक जो दिखाई दे रहा है, तो it doesn't work like that. See, हमें पॉलिसी नहीं देना है, हमें पॉलिसी अगर हम दे रहे हैं तो हम क्लेम भी दे पाएं। Okay, you're talking about physical goods, but what happens if I have invested into say molds and dyes? Now those are there, and I have invested it for a particular item that has to be made. Now that is all covered within that cost. I personally feel that ECGC should look into it, where most of the exports which is in the unorganized sector out of Moradabad, Panipat, Karur, wherever it is, that ERP system should be kind of streamlined where everybody else. अगर मॉल्स का जो प्रिपरेशन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपको दिया गया है ऑर्डर, उसके अंदर वो प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि पहले आप ये मॉल्स बनाएंगे जिसका इतना खर्चा आएगा और उसके बाद ये आप कर रहे हैं। So it all depends कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना है। I don't think that is what how it happens. It is always that you get an order and you know that you have to make that mold. ओके, तो पॉइंट है कि अगर ये कोई ऑर्डर आया है चाहे कितने भी अमाउंट का हो, अगर उस ऑर्डर के बेस पे आप कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं जो उस ऑर्डर से रिलेटेड है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? I personally feel that particular thing needs to be looked into great yes, definitely. You can if through EPCS they can give a recommendation to ECGC that these are the requirements from their member. What are the so maybe on that we can give it to our management also. See, every day we are ready for a change and we keep on changing. So that is the bottom line. We can't say that whatever we have, okay, you take it or leave it. Go another day. Nokia has not survived because of that only. So we are coming with a lot of solution and the solution is based on the requirement. So whatever requirement we are getting from the ministry, from the commercial council, whatever best possible is there, we are providing it. So definitely if at all it is there and it is possible, the management will really take care. जैसे अभी आपने कहा कि या तो कम्युनिकेशन गैप है या लैक ऑफ एजुकेशन है, ECGC के बारे में एक्सपोर्टर्स ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको किस स्टेज पे जाके बेनिफिट मिलेगा। तो सपोज आपने एक बार शुरू में ही प्रेजेंटेशन में कहा कि आप नाइजीरिया ले लो या कोई ऐसी रिस्की कंट्री ले लो जहां आप काम करना चाह तो रहे हैं लेकिन डर से नहीं कर रहे हैं, तो वी विल हेल्प यू। मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ व्हाट आई हैव जस्ट फेस्ड इन द लास्ट 3 months कि नया बायर आया, नया ऑर्डर आया, हमने ECGC को भेजा उसका सारा डिटेल, उसका एड्रेस और उसका इनवॉइस, तो सॉरी परचेज ऑर्डर। तो ECGC ने कहा कि हाँ ये डिफॉल्टर नहीं है। मैं जब 5 भेजती हूँ तो उसमें से 3 डिफॉल्टर्स कहा जाता है, 2 नहीं कहा जाता है। तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हो जाते हैं, जो 3 डिफॉल्टर्स बताया ECGC ने उसके साथ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करें। पर अगर 2 को बिल्कुल ECGC ने बोला ये डिफॉल्टर नहीं है और 95% कवरेज देंगे, फिर हम लोग एक पेमेंट टर्म्स तय करते हैं क्रेडिट पे 60%, 60 डेज, 30 डेज, 90 डेज और काम शुरू कर देते हैं। वो पहला बायर जो मेरे साथ काम कर रहा है, जो ECGC के बुक में सेफ है, उसने
पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया। अब आप थोड़ा सा एजुकेट करते हैं कि कैसे फिर होता है हल। सर क्या है मैम, क्या है कि ये जो डिफॉल्टर लिस्ट या जो कॉशन लिस्ट ये बनता कैसे है, ठीक है। इन लास्ट 68 ईयर्स 69 ईयर्स में जो भी हमारे पॉलिसी होल्डर थे, ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्टर हु हैज टेकन अ पॉलिसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल एक्सपोर्टर। जिन्होंने भी हमसे पॉलिसी ली और लेने के बाद उन्होंने किसी भी टाइम पे हमें बोला कि ये बायर ने मेरा पैसा नहीं दिया है, राइट, वो बायर हमारे कॉशन लिस्ट में आए और ये डिफॉल्टर लिस्ट में आए। हम प्लेन वर्ड्स में अगर बात करें, चाहे हमने उसके ऊपर पॉलिसी में एक्सपोर्टर को क्लेम दिया हो या क्लेम नहीं दिया हो, कि क्लेम नहीं देने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि जो कंप्लायंस पार्ट है, प्रीमियम का पार्ट है, वो क्लाइंट ने एक्सपोर्टर ने नहीं दिया हो तो शायद हम उसका क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया हो। लेकिन इट डजंट मीन कि एक बार उसने जो रिपोर्टिंग हमें की है कि मेरा बायर पेमेंट नहीं किया है तो वो आउट ऑफ ये नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा। तो ओवर द ईयर, ये पिछले 30, 40, 50 सालों में ये जितने भी ऐसे बायर जिन्होंने इंडिया के किसी भी एक्सपोर्टर का जो हमारे पॉलिसी होल्डर थे और उनका पैसा नहीं आया, ये आज की तारीख में सारे के सारे डिफॉल्टर लिस्ट में ECGC में हैं। इनके अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जैसे कि एक्सपोर्टर ने हमसे पॉलिसी भी नहीं ली है लेकिन वो अपने बैंक से लोन ले रहा है, पैकिंग क्रेडिट का लोन ले रहा है, पोस्ट शिपमेंट का लोन ले रहा है, अब वो अकाउंट NPA हो जाता है। और NPA क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 करोड़ का कोई पोस्ट शिपमेंट लोन था और वो डिफॉल्ट हो गया। तो वैसे केस में जब बैंक हमसे क्लेम फाइल करता है और अगर ये पोस्ट शिपमेंट का लोन है जिसके लिए क्लेम फाइल कर रहा है, तो जितने भी बायर्स हैं जिसका बिल पेंडिंग था वो भी बायर हमारे डिफॉल्टर लिस्ट में बनते हैं। तो ये एक पूरा ओवर द ईयर का जो इंफॉर्मेशन है, इट बिकम्स अ डिफॉल्टर लिस्ट। अब ये एक एक्सपीरियंस है जो हमारे पॉलिसी होल्डर का है, जो हमारा एक डेटाबेस में, बट उसके साथ साथ अपोजिट भी बहुत सारे एग्जांपल है कि हमारे वीजा में है फिर भी लोग एक्सपोर्टर उसके साथ काम कर रहे हैं, उसका पेमेंट भी आ रहा है। लेकिन सर ECGC का एक और लूप होल जो रिसेंटली मैंने फील किया कि एक अच्छा डिसेंट बायर है जिसने मान लीजिए एक्सपोर्टर को दे दिया 5% 10% की पेनल्टी डिस्काउंट, क्योंकि या तो उसने डिले किया या उसके माल में थोड़ा बहुत फॉल्ट हो, तो ECGC उसको भी डिफॉल्टर करके अपना हाथ खड़ा कर रही है कि नहीं नहीं हम तो इसको नहीं कवर करेंगे। इसमें आपका क्या कहना है? Add one more point is that after I have taken an ECGC cover, you again put a customer in the negative list. Then what happens? Then you say that okay, it was in the negative list. Now I've already taken a cover from you. I've started production, and then he becomes a negative. Then what happens? You already faced that. I agree. जो हिंदी में बोलते हैं ना, इंश्योरेंस बीमा आगरा की वस्तु है, ठीक है। तो आप इसको ये बिल्कुल भी देखिए, आई एम नॉट टेकिंग फेवर ऑफ एनी साइड, बट यू मस्ट अप्रिशिएट दिस कि जिस टाइम पे आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं वो उस टाइम की जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, चाहे वो कवर का या नहीं का। अब है कि जैसे सर मैं आपका आंसर दे रहा हूँ आपके क्वेरीज का, कि इमेजिन सर ने बोला कि हमने पॉलिसी लिया, एक्सपोर्टर ने किसी ने देखा कि बायर भी अच्छा है और हमें कवर भी मिल गया, इमेजिन हमने उनको अप्रूवल भी दे दिया। बट अगर वही बायर ऑलरेडी किसी और एक्सपोर्टर के साथ पहले से काम कर रहा है और वो हमारा होल्डर है ना, ECGC का पॉलिसी होल्डर, अब आपके पॉलिसी लेने के 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद वो कोई पॉलिसी होल्डर का जिसका ड्यू डेट का पेमेंट 2 महीना पहले ही था, वो 2 महीने भी गुजर गए हैं और पेमेंट नहीं आ रहा है, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? ECGC को बताएगा कि सर मेरा पेमेंट ये नहीं आया है, मेरा 50 लाख का माल है, 2 महीने पहले ड्यू डेट गुजर गई, हम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, अब तो पेमेंट का कोई हमें बात भी नहीं कर रहा है। अच्छा, वही सेम बायर है जिसके आपने ऑर्डर लिया है। नो व्हाट द ECGC विल डू? ECGC बाय डिफॉल्ट एज ए थंब रूल हम उसको अपने डिफॉल्टर लिस्ट में डालेंगे और साथ साथ अगर हमने किसी को भी कवर दिए रखा है सारा का सारा कवर विड्रॉ होगा। दिस इज हाउ इट गोज। अच्छा, ऐसा ये नहीं, हाँ इसमें ये प्रॉब्लम आपके साथ जरूर होगी या किसी भी एक्सपोर्टर के साथ कि भाई हमें मिला था, आई गॉट दिस कॉन्फिडेंस और मैंने अभी सब कुछ किया था और अचानक से आप मेरे पैर छीन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने तो विड्रॉ कर लिया, अब तो मैं कहीं नहीं रहा। सो दैट इज द वन वे ऑफ लुकिंग इनटू इट। अनदर वे ऑफ लुकिंग इनटू इट कि भाई आपको हम प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दिए कि सर किसी और का वो पैसा लेके बैठा है तो आपका कैसे देगा, हाउ यू थिंक। सो इट्स लाइक एक एक्सपोर्टर का इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के लिए बहुत काम की चीज़ है। सो वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द अदर एक्सपोर्टर बाय putting that buyer into the caution list, one way,
एंड नाउअडेज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर सेइंग इट कि अगर किसी एक्सपोर्टर ने टाइम पे हमें रिपोर्ट किया और सेम, अच्छा बायर भी ना बहुत चालाक होता है, उसे पता है कि हम इसका पेमेंट अभी देने वाले नहीं है, तो ही कीप ऑन टॉकिंग विद सम अदर एक्सपोर्टर्स। लेकिन आज की तारीख में इंडिया एक ऐसे अच्छी जगह पे है कि आई हैव सीन सो मेनी केसेज जहाँ एक 50 लाख का पेमेंट ड्यू है, हमने उसे क्वेश्चन लिस्ट में डाला है, वही बायर किसी और को ऑर्डर दे रहा है 2 करोड़ का और उसे बोल रहा है कि भाई मुझे कर दो, लेकिन वो कंपनी आगे फिर किसी को बोली सर ये तो डिफॉल्टर लिस्ट में है, आप इसे हटाओगे, तो हमने बोला कि ये तो 20,000 में है, तो अच्छा वो पूछ रहा है कि किस लिए है, तो लेते हमने बताया कि ए बायर एक्सपोर्टर था, उसका पेमेंट नहीं आया है। नाउ ही इज टॉकिंग टू द बायर आल्सो, तो बायर इज सेइंग टू द एक्सपोर्टर कि आप जैसे भी करके ना अगर क्या कहते हैं ये आप हटवा दोगे तो मैं ये आपको 2 करोड़ का ऑर्डर भी आप ही को दूंगा, उसको मैं नहीं दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, वी स्टिक टू द नॉर्मल बेसिक थिंग कि भाई आपका पैसा नहीं आया है, आप डिफॉल्टर लिस्ट में हो, जब तक आप पूरा पैसा नहीं दोगे मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे। चाहे अब उस प्रेशर में क्या हो, बिकॉज ही हैज टू एक्वायर द ऑर्डर फ्रॉम द सेकंड कंपनी, ही हैज टू मेक द पेमेंट एंड ही हैज मेड द पेमेंट, सो देयर आर लॉट ऑफ केसेस कि ये जो डिफॉल्टर लिस्ट में प्लेस होना उसकी वजह से दूसरे एक्सपोर्टर को इसी का कवर नहीं मिलना, बैंक में फाइनेंसिंग बंद हो जाती है, बिकॉज द बैंक पीएसयू बैंक किसी बिल को डिस्काउंटिंग करने के पहले इसी चेक करती है, अगर वो क्वेश्चन लिस्ट में है ही इज नॉट सपोज्ड टू डिस्काउंट एनी बिल, तो देयर आर लॉट ऑफ चेक्स जहाँ पे हम बायर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप वो दिन गए कि आप किसी को एक को डिफॉल्ट करो फिर दूसरे के साथ ऑर्डर लो फिर उसका भी काम करते रहो, तो ये वर्क दोनों वे में कर रहा है, हम दूसरे एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बट हाँ ऑल ऑफ ए सडन जब कवर विड्रॉ होता है तो वो आपके लिए या किसी भी एक्सपोर्टर के लिए पेनफुल तो है, बट वी कांट हेल्प इट बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ऐसी वर्क करती है कि अगर हमारे ऑर्डर में से किसी ने बताया है वी हैव टू एक्ट ऑन। हाँ बट ऐसे भी इंस्टेंसेज है कि हमने बायर पे इमेजिन 20 करोड़ का कवर दिया है और कोई एक छोटा सा एक्सपोर्टर 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट हमें प्लेस करता है कि सर मेरा 10 लाख रुपए नहीं आया, उस पे हम जो एग्जिस्टिंग हमारे एक्सपोर्टर है ना उनकी जो लिमिट है उनको हम कैंसिल नहीं करते। सी वी टेक इनटू अकाउंट कि ये 20 करोड़ का आया है, 20 लाख का आया है, उस पे हम उसे बस कॉशन लिस्ट में डालते हैं या एक रेड फ्लैग डालते हैं कि हम नया कवर नहीं देंगे किसी और एक्सपोर्टर को, बट पुराने वाले को कंटिन्यू करते रहते हैं, उसकी पेमेंट एक्सपीरियंस मंगा के कि सर आपका पेमेंट आ रहा है और बाकी सब बोले सर मेरा तो पेमेंट आ रहा है। वी कीप ऑन प्रोवाइडिंग कवर। अगर ये रेशियो इतना बड़ा है कि 20 करोड़ के कवर है, क्योंकि आजकल थोड़ी कंपटीशन में ना कुछ लोग जानबूझ के भी डिफॉल्टर लिस्ट में डालने की कोशिश करते हैं कि चलो मेरा नहीं तो सामने वाले का बिजनेस खराब कर दे। हम पहले डिफॉल्ट में एग्जिस्टिंग का चलने देते हैं, लेट्स सी वी गेट अनदर सेकंड डिफॉल्ट फ्रॉम सेकंड एक्सपोर्टर, देन व्हाटएवर cover we are providing to any exporter be in L&T or MRF doesn't matter, सारे का सारा cover withdraw हो जाता है if we get another second default from second exporter कि भाई। और जब हम withdraw करते हैं इसका मतलब क्या है, withdraw वाले दिन के पहले तक भी जो भी BL रेट इशू हो चुका है एक स्टैंड कवर, ठीक है, शिपमेंट अगर आपका हो गया है उस डेट कम्युनिकेशन के पहले इट इज स्टैंड कवर, उसके बाद का कोई अगर BL रेट है तो वो कवर करवा। मैं बात कर रही थी यूरोप में एक कंट्री से एक्सपोर्ट के पर्पस में, तो उन्होंने बोला कि हमारा ना कस्टमाइज़ करके आप दे दीजिए, तो हमारी जो डील हुई वो 20% की मतलब एडवांस की बात हुई, मैंने 30% के लिए बात की बट उन्होंने कहा 20%, ठीक है। अब वो चीज़ मेरे भी समझ में आई और मैंने एक मतलब ड्राफ्ट वगैरह सब चीज़ तैयार कर दिया, बट मैं फिर जब ECGC के पास गई उन्होंने बोला कि हमारा जैसे आपने बोला शिपमेंट के बाद शुरू होता है, एंड आई वाज थिंकिंग कि मान लो मैंने कस्टमाइज पे सब चीज़ें बना दी, उसने मुझे 20% एडवांस पेमेंट भी कर दी, अब मेरा पोर्ट पे जाता उसने सामान लेने को मना कर दिया, कैंसिल कर दिया ऑर्डर। लाइक अमेजोन का भी केस आया था कि उसने 8,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, 3 महीने की एडवांस पेमेंट मतलब बोल दिया कि 3 महीने तक हम आपको पेमेंट देंगे और ताकि उसका AI से वर्क हो जाए, उसका आगे जाए, ठीक है। तो इस केस में भी वो मान लो किसी और को ढूंढ ले और वो सोचे कि कोई बात नहीं 20% ही तो जा रहा है हमारा मतलब जो पेमेंट है, बाकी तो उससे इतना बच रहा है, तो मान लो एंड टाइम पे उसने मना कर दिया, मेरा पोर्ट पे सामान पड़ा हुआ है वो कस्टमाइज है, बाकी का माल मेरा पूरा कस्टमाइज है, तो उस ना तो मैं सामान का कुछ कर सकती, मैं किसी का भी कुछ नहीं कर सकती, तो
प्री शिपमेंट का या फिर उसकी पॉलिसीज हमारे लिए क्यों नहीं है, बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए ही क्यों है? मतलब अगर हम अपकमिंग, मतलब अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे लिए भी तो ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर एंड नहीं, बिल्कुल सही है मैम। देखिए, बड़े एक्सपोर्टर के लिए भी हम कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर तो देते ही नहीं है, जैसा आपने बताया। ओनली हमने अभी स्टार्ट किया है इंसॉल्वेंसी के लिए। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, दैट इज द ओनली रीजन जहाँ हम शिपमेंट के पहले वाला कवर कर रहे हैं। तो ये टेक्सटाइल में ही 90% हो रहा है। टेक्सटाइल छोड़ के बाकी जगह अभी बस एक दो हैंडीक्राफ्ट आइटम में, जॉन जैसे मैंने बाहर बोला, जॉन स्टोर करके बाहर था जो हुआ है। अदरवाइज आपके केस में ज़्यादातर डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट यानी कि बायर जिंदा है, वो लेना नहीं चाहता है। तो वैसे केस में हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। बड़ा और छोटा एक्सपोर्टर की तो बात ही खत्म है। वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट, व्हाटएवर प्रोडक्ट भी है। बट आपके केस में मेरे तरफ से सोल्यूशन ये है मैम कि इट्स नॉट अबाउट हैंडीक्राफ्ट, जहाँ आप एटलीस्ट किसी को बेच भी सकते हैं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट है, किसी दूसरे कंट्री में तो बेच ही जाएगा। सी, अगर आई विल कम टू द पॉइंट, यू सी व्हाट इज हैपनिंग कि कोई अभी एक रेडिएटर की कंपनी थी, ठीक है, पाल रेडिएटर्स नाम है। क्या बनाती है? जो गाड़ी के अंदर इंजन के आगे जो वो कूलिंग करने के लिए जो रहता है ना पूरा सिस्टम, वो बनाती है रेडिएटर का। अब एक किसी कंपनी, किसी एक ऑटोमेटिव ब्रांड जो किसी पर्टिकुलर कंट्री का है, उसके मॉडल के हिसाब से इसने 10,000 पीस बना के डीपी पे भेजा। डीपी यानी पहले वो क्या कहते हैं, पैसा देगा और बाद में वो सामान लेगा। अब बायर ने सामान लेने से मना कर दिया कि सर हम ना ऑर्डर ही कैंसिल करते हैं। वो भी तब जब क्या कहते हैं, कुछ कंटेनर हाईटी में था और कुछ कंटेनर पोर्ट पे पहुंच गया है। अब इसके लिए वो इंडस्ट्रियल जो कस्टमाइजेशन होता है ना, वो तो या तो 100 रुपये में बिकेगा या वो जंक में बिकेगा, स्क्रैप में। उसके अलावा बीच का कोई टेकर ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर डिजाइन, पर्टिकुलर ब्रांड के लिए बनाया गया है। तो वैसे केस में इट्स जस्ट लाइक ए अबंडनमेंट, कि पूरा का पूरा आपको अबंडन करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो माई सजेशन, इनफैक्ट ये बहुत सारी जगह पे होता है लेदर के आइटम में, जहाँ अरमानी के साथ डील कर रहे हैं। अरमानी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर मैं लूँगा तो ठीक है, अगर मैं नहीं भी लेता हूँ तो भी आप मेरा माल किसी को बेच नहीं सकते हैं। अगर बेचेंगे तो आपको 10 मिलियन का सू कर देंगे। यू कांट सेल माय ब्रांड। तो वेरी स्ट्रिंजेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे आर मेकिंग इन टॉमी हिलफिगर एंड ऑल। तो उनके लिए तो ऐसा है कि विन दोनों साइड में मेरी विन है। हमने अगर ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया ना, तो जो टीएनजी टॉमी एंड हिलफिगर का जो लगा है लोगो, उसके साथ अगर आपने बेच दिया, फिर तो हम आपको 15 मिलियन और 50 मिलियन पता नहीं क्या डालेंगे। तो उनके डर से ये लोग फिर स्क्रैप करके बेचते हैं, या पूरी उसकी जो ब्रांडिंग है ना उसको काट के फिर ऐसे किलो के भाव में बेचते हैं। तो माय सजेशन इज ओनली दिस कि जहाँ भी कस्टमाइज्ड गुड्स है, वहाँ पे बेस्ट टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है जिसमें आप सेफ डील करते हैं। ECGC का कवर लीजिए, 20, 30, 40 जो एडवांस है, दैट इज द बेस्ट वे टू टेक इट। क्योंकि ऐसे केस में कम से कम बायर आपके गुड्स को लेने से मना नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ही भी 30-40% दे चुका है आपको, राइट? तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज यू आर मेकिंग अ शिपमेंट ऑन अ DA टर्म्स। DA मतलब he doesn't have to make a single penny other than the 30-40%, and he will definitely take the goods, क्योंकि उसे तो मिल रहा है ना फ्री में। तो एटलीस्ट आपके पास वो टेंशन तो नहीं है कि ये माल नहीं लेगा तो मैं क्या करूँगी, कहाँ मैं जाऊँगी, किसको बेचूंगी, कहाँ से ढूंढूंगी। ये बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि कस्टमाइज है। सो आई थिंक इट इज़ अ बेटर वे। क्योंकि मैं ऐसे हर एक कस्टमाइज गुड्स में एक्सपोर्टर को बताता हूँ कि डीपी अगर आप लेंगे और कल को उसने नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया, इट इज़ योर बेबी। आप इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि मैं जहाज ऐसे पानी में फेंक देता हूँ और मुझे पैसा दे दो। डजंट वर्क लाइक दैट। सो द बेस्ट वे इज 30-40% एडवांस लीजिए, बाकी का DA 30 में दीजिए। ही विल हैप्पीली टेक द गुड्स। नाउ द सिचुएशन इज आइदर ही विल पे इट और ही विल नॉट पे इट। Even he is not paying it, you have the ECGC policy, you will get the 90-95%, everything is sorted out. So this is the way out कि customized good में even DP पे वो मांग रहा है, आप उसे DA पे दो, let the buyer take the goods. That is more viable position rather than thinking of re-importing or the reselling, right? ये आप हो या कोई भी customized goods हो, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली इसके इंश्योरेंस के टाइम पीरियड के बारे में है कि ये कब से कब तक वैलिड रहता है, शिपिंग से लेके सपोज हमने रियल डेट जो एक्चुअली है ना, शिप्ड ऑन बोर्ड, SOB एक टर्म्स है, SOB
ठीक है. If we really go by the objective answer, bill of lading and SOB, whichever is earlier. तो SOB डेट शिफ्ट ऑन बोर्ड जिसको बोलते हैं, अगर आपके BL डेट में 5 दिसंबर का BL इशू है और उस पर 4 दिसंबर का SOB लगा हुआ है, तो ये ECGC पैरेलल 4 दिसंबर आपका डेट ऑफ शिपमेंट हो गया. तो अगर आपका कोई भी एक्सपोर्ट ये डेट निकल चुका है और इसके बाद कुछ भी हो रहा है, चाहे बायर आपका एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, बायर ने एक्सेप्ट करने के बाद मना कर दिए, एवरीथिंग जो हमने बताया आपको सब नहीं. मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज शिपमेंट पहुंच गई जी, ठीक है, हमने उसे क्रेडिट दे रखा है जी, ठीक है, तो वो 2 महीने 1 महीने 3 महीने का टाइम देता है समटाइम पेमेंट करने के लिए. जी. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ECGC कितने दिन तक उसको वैलिड रखता है? सर क्या है कि सर का क्वेश्चन ये है कि हमने एक एक्सपोर्ट किया, लेसी आपने क्या कहते हैं 10 अप्रैल को एक एक्सपोर्ट किया, DA 90 डेज का शिपमेंट था, तो ये 10 जुलाई का ड्यू डेट है, राइट. ECGC का पिक्चर में आती है. 10 जुलाई को मेरा पेमेंट नहीं आया, तो अब ECGC क्या करेगी? ECGC का जो अपना इंटरनल रूल है कि आप मिनिमम 4 महीने के बाद ही क्लेम फाइल कर सकते हैं, उससे पहले आप क्लेम फाइल नहीं कर सकते. पहला तो ये ठीक है. ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सपोर्ट में डिलेड पेमेंट इज वेरी कॉमन. अगर हम ये अगले दिन ही जंप करने लग जाए तो हर बायर डिफॉल्टर इसमें प्लेस हो जाएगा, फिर तो मतलब ट्रांजेक्शन ही नहीं कंप्लीट होने वाला है. तो ये जो 4 महीने का जो कूलिंग दिया गया है वो उन्हीं चीज़ों को टेक केयर करने के लिए कि अगर कोई थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो आपका पेमेंट अगर आना होगा तो आ जाएगा. तो 4 मंथ इज द टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड जहाँ आपको क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं. बट रिपोर्ट ऑफ डिफॉल्ट की जो फाइलिंग है, जो पहला स्टेज है, वो ड्यू डेट के 45 दिन के बाद आ जाता है. यानी कि ड्यू डेट के 45 दिन के बाद यू मस्ट हैव टू रिपोर्ट टू ECGC, क्योंकि उसका रिपरकेशन बहुत बड़ा है. जब एक्सपोर्टर पॉलिसी होल्डर हमें रिपोर्ट करता है, हम उसको डिफॉल्टर लिस्ट में डालते हैं. हम फिर बायर को ऑफिशियली इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे एक होल्डर ने आपने कुछ शिपमेंट किया था और आप पेमेंट नहीं कर रहे, मुझे 5 दिन 7 दिन के अंदर रिप्लाई दीजिए, नहीं तो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू पुट यू इन द कॉशन लिस्ट. वी इन्फॉर्म डायरेक्टली टू द बायर. वी ऑल्सो इन्फॉर्म थ्रू द एम्बेसी ऑल्सो. सो वी पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर टू देम. अगर बायर एक जेन्युइन बायर है, एक रनिंग बायर है ना, ही विल 20-30% में तो वो तुरंत 10 दिन के अंदर पेमेंट ही कर देता है. तो वन सिंगल मेल विल वर्क जस्ट लाइक दैट. अदरवाइज पेमेंट आया नहीं आया डजंट मैटर, हमारा एक प्रोसेस है जो हम करते हैं, और फिर उसके बाद भी नहीं आया तो आप क्लेम फाइल कर दीजिए. और सर इसमें मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि इससे पहले जो है ना मैं मरीन पॉलिसी लेता था, आपने अभी भी लेता हूँ जो भी शिपमेंट मरीन जो है वो तो सर, ये इसमें ज़रूरत पड़ेगी मरीन पॉलिसी की, या ये ठीक रहेगा? एक सर ये आप ये समझिए कि ये जो क्रेडिट इंश्योरेंस है ये किस चीज़ के लिए लेते हैं? ये हम लेते हैं नॉन पेमेंट रिस्क फ्रॉम द ओवरसीज बायर. मरीन किसके लिए लेते हैं? एनी डैमेज टू योर गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट फ्रॉम योर वेयर हाउस टू द बायर वेयर हाउस. एनी डैमेज टू योर गुड्स. So this is another insurance and that is the another insurance. The two different things. इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. बहुत बार आप सुनते होंगे कि शिप ने 50 कंटेनर को पानी में फेंक दिया, इमरजेंसी होती है तो कैप्टन कॉल देता है. अगर आपने मरीन नहीं लिया हुआ है क्योंकि मैंडेटरी नहीं है और लोग नहीं भी लेते हैं, तो आपका गया, नथिंग कैन बी डन. या इनफैक्ट माल पहुंच गया, बायर ने माल भी ले लिया. अब क्या हुआ कि बीच में मौसम खराब होने की वजह से आपके कंटेनर में पानी चला गया, आपके गुड्स में फंगस आ गया. बायर ने अपने वेयर हाउस में माल लिया, उसको खोला और आपका उसका वीडियो बना के सर्वे करके आपको वो तुरंत 10 दिन के अंदर रिपोर्ट बैक कर रहा है कि सर ये आपका माल ही खराब है, हम तो एक भी पैसा नहीं देंगे. उस केस में ECGC भी आपको कवर नहीं देने वाली है, बिकॉज ECGC पॉलिसी का एक बेस लाइन क्या है कि उसने एप्पल मांगा है तो आपको एप्पल देना है, आपको सड़ा हुआ एप्पल नहीं देना है. अगर आप सड़ा हुआ एप्पल दे रहे हैं तो अगर वो पेमेंट नहीं दे रहा है, वी कांट हेल्प यू, राइट. तो वैसे केस में ये कहाँ पे मिस हैंडलिंग हुई है? ये कंटेनर की मिस हैंडलिंग हुई है. तो दिस क्लेम विल गो विद द मरीन, कि मरीन के नेग्लिजेंस की वजह से ये कंटेनर का मिस हैंडलिंग हुआ, आपका गुड्स डैमेज हुआ, एंड देन जो भी ये इसी क्वालिटी की वजह से आपका क्लेम तो एंटरटेन ही नहीं करेगी, राइट. सेकेंडली आई एम जस्ट अमित जी, बाकी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिकली हमारे साथ कई एक्सपीरियंस तो हमारे कोलीग्स एक्सपोर्टर्स को भी हुए हैं कि जैसे ही आपकी शिपमेंट तैयार होती है, कई बार आप कहते हैं जी ये तो इंश्योर्ड है,
मगर आप कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपकी फैक्ट्री से जैसे ही शिपमेंट निकले उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी फैक्ट्री से लेके डेस्टिनेशन बाहर तक होनी चाहिए। हुआ क्या है कि अभी आपने सुना होगा 10 या 12 साल पहले कि लोगों ने अपना सामान 8-9 एक्सपोर्टर थे जिन्होंने तुगलकाबाद सी ड्राई पोर्ट के ऊपर सामान भेज दिया। रात को आग लग गई, वो सारी शिपमेंट जल गई। वो थी कोई 14 करोड़ की थी। अब उन्होंने उनके अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर केस डाल दिया, इवन वो हाई कोर्ट तक चले गए। तो उन्होंने बोला कि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि आपकी जब शिपमेंट फैक्ट्री से आई है वेयर हाउस तक तो उसकी कुछ है ही नहीं इंश्योरेंस, मगर एज पर आवर रूल हम आपको 40 रुपीज़ किलो देंगे। तो अल्टीमेटली ये उससे लड़ते रहे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये करते हुए कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या हुआ, इनका 40 रुपीज़ किलो के हिसाब से उन सबको पैसे मिले हैं 14 साल बाद। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप शिपमेंट भेजो तो अपने वेयर हाउस से जैसी शिपमेंट निकले उसकी इंश्योरेंस वहीं से लेके डेस्टिनेशन तक आपने कराए। दैट इज ऑल्सो न्यू थिंग्स व्हाट वी लर्न। If you are an exporter, आपको इनमें से कहीं ना कहीं directly indirectly you have to deal with these authorities. So one, the first and foremost is DGFT, because anyways if you don't have an IC code you can't do any import and export business. So DGFT will categorize the goods into 3 categories: prohibited, restricted, or freely importable, exportable, depending on the needs of the country. The next comes the RBI. So RBI is very liberal as far as just we discussed. At least in the last 6 months, there has been a lot of liberalization and export relief measures they have issued, and these are very welcome measures, and we hope that these will solve issues like the ones which you have pointed out. And the next authority which is of prime importance is customs. So if you are doing an export business, you have to have those export bills generated, and those bills appear in the EDPS portal of the RBI. And those actually need to be knocked off so that the exporter remain on the right side of the law. The next comes International Chamber of Commerce. As Amit has also pointed out, there are certain guidelines like UCP guidelines in case you are into trade business, like you are doing in LC, or if you are doing any other business like you are sending documents on collection, then there are URC rules. The reason for these rules is basically like this: if you are sitting in one part of the world and you are dealing with a buyer in another part of the world, you need to be on the same lines. For example, in UCP, invoice is not required to be signed or dated. But if you typically go to any traditional banker in India, your guy at the front end, they would say, why is the invoice not signed or signed or dated? I won't accept it. But UCP clearly spells out that invoice is not required to be signed or dated, and this is the clear understanding given to the Indian guy, and this is the clear understanding that the other counterparty, whichever country he may be, dealing with, so that party also has the same understanding. So these rules, import terms like UCP guidelines, URC guidelines, so these have been coined by International Chamber of Commerce, so that the trade remains smooth and the other party also has the same understanding as the Indian party has. The next comes is sanctions, FATF and OFAC. So every country, you would know that OFAC is Office for Financial Assets Control. It's managed by United States, and similarly other countries also will find that US, UK, and there are so many sanction authorities which are there. So they typically decide on whether they need to impose a country-wide sanction or an entity-wide sanctions. Recently, you would have seen that this Russian companies, Rosneft, and one more, those have been sanctioned by the US OFAC, and as a result, whatever crude oil we've been importing, we can't import. So just to give you a brief on these sanctions, directly or indirectly, these impact your set of businesses, because as a lay person, you wouldn't know when these guys would come into sanctions, whether this customer is actually into sanctions or not. So hence, you need to be very vigilant and see the sanctions which these guys, the buyers, are exposed to. For example, if you're dealing with any specific entity in Russia or such countries where there is so much going on, then you need to be extra cautious. So this is how the EDPMS works. I think most of you guys would anyways know.
that in case you are doing any shipping or any export, the customs enter those shipping bills into this EDPMS portals. Bankers have the responsibility to put the entries of receipts into this portal. So at the end of the day, your export done through customs and the value receipt should tally. So this is what the EDPMS functions. So earlier in older days, what used to happen, bankers used to manage it manually. So we used to see how many exports we have done, what is the realization which has come or not come, and if there is unpaid realization, we used to report it manually to Reserve Bank of India. So RBI work is now simpler. They can easily go and look at the country-wide receivables which are pending, and they can also look at the exporter-wise what is the value which is pending is each one of you. So these are some of the important critical export guidelines which you guys need to be aware of. The first and foremost is you need to ensure that the shipment is routed through bank. As Amit has also pointed out that it is very, very important, especially for the exporters, the new ones, that you route the documents on bank-to-bank basis. Because even if you have to go to ECGC tomorrow to get any claim, if your documents are not routed through bank, they will not give you any claim. Unfortunately, what happens, typically a lot of these customers who have done the direct dispatch, they would come to the bank and they would ask for this reference number, and unfortunately, if you not routed the documents on the bank, we have to go to RBI to seek approvals, then only the lodgements can happen. So in a nutshell, it is better, especially if you are a new exporter and if your counterparty is also new, please route the documents on bank-to-bank basis so that the realization can come and it can be accounted for in a timely manner. Another critical thing which I would like to brief you is, like in case you've done a shipment and you are about to realize the money in parts. For example, you've done a $1 lakh shipment and you think you will be getting this realization in parts, say $10,000, $10,000. Bank will not be able to credit your proceeds unless and until you get the full amount. So you have to wait till the entire amount comes, or the entire amount you will tell the bank that it is never going to come. Then only bank will be able to credit the shipment. So very important, you route the documents through bank and submit it within 21 days. The next realization period has been, RBI has given a leeway now. It was earlier 9 months from the date of export. Now RBI has recently given a leeway. So you may extend further credit, and up to 15 months you can give credit. And please do take insurance if you are giving such a large number of days in terms of credit. The next is direct dispatch. As we told you, if you are a status holder exporter, 1, 2, 3 or 4 or 5 star, then you can definitely do a direct dispatch, and the bankers will not ask for original documents. You can submit copies of the documents and the bankers will lodge those documents. Another important thing is, recently the RBI has given another leeway. Earlier, if you are getting any advance towards exports, you need to ensure that the shipment happens within 1 year. Now this period has also been enhanced from 1 year to 3 years. So these are the few things which you guys need to be aware of. So I'll just quickly take you through these guidelines. So a lot of times what happens, in export side there are two parallel rules are there. One is at the invoice level, another is at the consolidated level. Suppose as you're discussing about the buyers not making payment because of quality issues. So in those cases, what RBI says is, for such cases you can take invoice reduction. Means you go to the bankers will seek certain clarification. If your reduction is only up to 25%, then basis your mere declaration, banker will close the bill without asking for any supporting documents. But obviously you need to surrender those relevant export benefits, etc., which you would have taken. Now imagine a situation where your reduction is more than 25%. You go to the banker, you say, the other party has given me only 50% of the value. 50% they have not given me. Then what the banker will do is, the banker will check if you are a 3-year-old exporter with satisfactory track record, means your current overdue is not more than 5% of the realization in the past 3 years. For example, if you realize say 1 lakh in the preceding 3 years, so if your current outstanding is only up to $5,000, the bankers will be write off at their own end. Another RBI leeway has been given is, you can do, apart from this invoice reduction, you can also do a consolidated write-off at your book level. So how it works is, there are certain specific reasons, like the customer is turned insolvent, the unrealized amount is only after intervention of Indian MSEs,
the goods have been destroyed by port authorities, the guy is untraceable, the cost of legal action is disproportionate to the amount involved. In these 5 specific cases, you can go to the banker and approach for the write-off also. So write-off will always be on a consolidated level. So whatever amount you realize in the preceding calendar year, 5% of that amount can be written off under self-write-off scheme. Additionally, the banks can give another 10% write-off. So next is the extension part. So another very critical important thing is just to stay compliant on the various compliant front. It is very important that you realize your proceeds in 9 months. Now this period has been extended to 15 months. So bank, you can always go to the bank for further extension also. So bank will see if the value of amount involved is only up to 1 million. Then bank don't ask any question. Another critical thing here bank sees is 10% of the value realized in the preceding 3 years. So the same example if we take, if your money is not been realized, you need to get it extended. You go to the banker will ask for your preceding 3 years realization, and if the current outstanding, the overdue outstanding is up to 10%, then the banker will grant extension. Similarly, if you are exporting and importing from the same buyer, so there is set of guidelines available. So you can set off your export proceeds with the import payables, and basis of CA certificate and underlying documents, bankers will allow the set off. But the critical thing here is, as per RBI guidelines, the set off is allowed only for the same calendar year. It can't go beyond the same calendar year. Another, just a brief on how this system works, because once you are realizing the export proceeds, it can either be through a Bostro mechanism, it can also be through a Nostro mechanism. Sometimes what happens, you get the money routed through other bank. Okay, so I'll just give you 1 or 2 tips as to how to maximize your revenue also. For example, if you are giving any, if you are a large type exporter, you are not a small exporter, then you please give your Nostro bank details also to the remitting bank. So how it will happen is the money will travel to your Nostro bank account, and then you can negotiate on the commission which you intend to pay to your banker. In case you don't do this, in case you don't provide a Nostro bank details of your bankers, what will happen is the remitting bank will send the money as per their correspondent bank relationship. The money may land in your bank account by means of RTGS and FD, where you intermittently the bank would have charged higher commission, and this also causes problem in something called IRIN creation. So as we discussed in the previous slide, if you are an exporter and if you are realizing the money, the bankers have to create those inward remittance messages in EDPMS portal to knock off your bills. So the final recipient banker, suppose you are banking with ICICI Bank and you get money directly in ICICI Bank account. So I am supposed to create inward remittance message in EDPMS portal. Suppose you got money in HDFC Bank or say State Bank of India, then the final recipient bank, State Bank of India will have to create IRM in this EDPMS portal. Another situation which can come is money has been converted in inward rupees by State Bank of India and remitted to your bank account in ICICI Bank. In that situation, what will happen is the final beneficiary bank is ICICI Bank. Then we'll have to create those entries in your EDPMS portal. In nutshell, wherever your money gets, your account, where the money gets credited, in those lines only we'll have to create IRS. So these are some of the changes which have happened recently. So we'll just take you through. Like the first one which we already discussed, now this period of realization, it was 9 months. So now this has been extended to 15 months. Similarly, in case you got the money in and you are supposed to do the shipment, that shipment period has been extended from now 1 year to 3 years. And on the other side also this export credit. So export credit period has also been extended, pre-shipment period post-shipment period has also been extended from 270 days to 450 days. So this is only valid till 31st March 2026. And another RBI leeway is that in case you want to liquidate your export packing facilities, which have been granted on or before August 31st, 2025, those can also be done either through some other resource, some other export proceeds, or through domestic proceeds also. So generally RBI says in case you are doing any pre-shipment, that has to be knocked off through post-shipment. Else what they will do is, instead of giving you concessional discount, they will charge a penal interest. But here RBI is given a leeway.
only for credit facilities which have been given till 31st August 2025. And another thing which RBI has given, which is predominantly on the import side, I don't know how many people would be doing import also. Like a lot of cases, you will be getting samples, free of cost imports. In those cases, earlier RBI stand was, you please ask the customers to please go to your custom authorities, go to the port authorities and get those bill of entries amended. So that leeway has been given by RBI now. So bankers can take those requests. If you tell the banker that these are free of cost shipments, even though those are appearing in IDPMS, there is no import liability, then the banker can take your request and they can close those bill of entries. Last but not the least, which will have a huge impact as far as we know, that this closure of EDPMS and IDPMS entries. So what it means is, in case you have a shipping bill of up to 10 lakh rupees, the onus is entirely on you. You go to the banker, give a declaration, the money has been realized, not realized, partly realized, incorrect purpose code, X purpose code, Y purpose code, the banker is not going to bother. That is our understanding, and that is understanding given by RBI also. So our understanding is, if you go to the banker, if value is only up to 10 lakh rupees, then you go to the banker and tell if this money has been realized, basis your certification. Basis your certification only, the banker will close it. Forget about 106 and 105 and NRE money or whatever, they won't bother. At least we don't bother. So that's it from our side. Thank you very much. And if you, in case you have any question, please feel free to raise it. Can we get a clarification on this circular? Sir, clarification is obviously on the onus of the banker. At least if you come to us, we'll surely close it. So what do we do with the bank where we have got the money? Please speak to some senior official. My understanding is you would have gone to the front desk. The front desk guy would give you the same answer. I talked to the general manager, I talked to the vice president. They all are like that case. So you can write to RBI. You can write to RBI through them. There is no problem. My understanding is very clear. We would have done it. We still do it. At least RBI should give some kind of a relaxation कि अगर कोई exporter अपनी आप certify कर रहा है. उसे सर बेचारे उन्होंने तो लिख दिया कि 10 लाख तक निपटा दो. अब बैंक वाले तो नहीं मानते ना. सर ऐसा है ना, नहीं सर, वो तो किसी मैं आपको समूह आरटीजीएस का IRM क्रिएट कर देंगे. आप बोलते हो सपोज कि पैसा मेरा HDFC में आया था, किसी और बैंक में आया था, तब उस बैंक में आपको जाके बोलना पड़ेगा सर ये पैसे का आप IRM क्रिएट कर दो, और वो बिल को भी आप वहां पहुंचा सकते हो, मेरी ट्रांसफर हो सकता है, या वो पैसे का IRM के बाद एक EFIC जनरेट हो जाती है तो भी हो सकता है. तो सरकार ने पूरा बोल दिया कि 10 लाख रुपए तक जो एक्सपोर्टर बोलता है उसको मान लो. तो हमारा तो गाइडलाइन यही है कि जो एक्सपोर्टर बोलता है ये पैसा जिसका है हम वो मान रहे हैं. I now request our former chairman Shri Ravi Pasi ji to present a memento to Shri Amit Kumar ji on behalf of BPCA. और अभी जैसे बातें हुई तो बेटर है कि आप मैक्सिमम एडवांस पैसे लेके बाहर से ही काम करें, ताकि अमित जी के पास या सर के पास या और किसी के पास ज़्यादा ना जाना पड़े. सेफ एक गेम खेलो अपनी, क्यों पैसा कमाना बड़ा बहुत ही मुश्किल होता है. उसको एकदम लूज करना, वो भी किसी बाहर के लिए, वो उससे भी ज़्यादा गंदा होता है. उसके बाद तुम RBI में जाओ, बैंक्स में जाओ, इधर उधर चक्कर लगाओ. तो बेटर 40% से नीचे बिल्कुल काम नहीं करना. थैंक यू सो मच. memento to Shri Ajit Singh ji. बाकी और कोई क्वेरीज हो आप बात कर सकते हैं, फैकल्टीज अवेलेबल.